हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, इन विच ओशियन डज द लैब्राडोर करंट फ्लो। इसका आंसर है नॉर्थ अटलांटिक। नेक्स्ट है, विच करंट आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज इन द इंडियन ओशियन। इसका आंसर है सोमाली करंट। नेक्स्ट है, विच फैक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रीजन अलोंग द कोस्ट। इसका आंसर है सैलिनिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर इन द एरिया वेयर द कोल्ड एंड वार्म करंट मीट। इसका आंसर है थिक फॉग। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग करंट फ्लोज फ्रॉम द नॉर्दर्न पोलर अप टू एंटार्क्टिका। इसका आंसर है डीप ओशन करंट। Second question, examine the given statement and correct the wrong one. First है, ocean current gives specific direction and velocity to the water. This is a correct statement. Next है, deep ocean current flow with high velocity. This is a correct statement. Next है, generally surface ocean current are formed in the equatorial region. This is incorrect statement. Correct statement is generally surface ocean current are formed in the equatorial region as well as polar region. Next question, ocean current hold great importance for human life. This is a correct statement. Next है, the movement of icebergs is not dangerous for water transport. This is incorrect statement. Correct statement is the movement of icebergs is dangerous for water transport. Next है, water become warm near Brazil due to ocean current. On the other hand, it becomes cold near African coast. This is a correct statement. Third question, explain the effect of। फर्स्ट है, वार्म ओशन करंट ऑन क्लाइमेट। इसका आंसर है द अमाउंट ऑफ precipitation increases in the coastal region along with which the warm ocean current flow. Similarly, the temperature increases in the coastal region along with which the warm ocean currents flow. नेक्स्ट है, कोल्ड ओशन करंट ऑन द मूवमेंट ऑफ आइसबर्ग। आंसर है ड्यू टू कोल्ड ओशन करंट आइसबर्ग्स आर मूव्ड अवे फ्रॉम द पोलर रीजन. दिस आइसबर्ग्स कम अलोंग द मरीन रूट एंड प्रूव hazardous to the ship. नेक्स्ट है, द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन ओशन करंट्स। आंसर है द एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ कोस्ट लाइन एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रैकल फॉर ओशन करंट्स. The extended parts of coastline alters the direction and velocity of ocean currents. Next है, meeting of warm and cold ocean currents. Answer है dense fog is found in the meeting point of warm and cold ocean currents. Algae, plankton, etc. Fish would grow on a large scale in these areas. Fish come in these areas on a large scale and breed. Therefore, extensive fishing grounds are found in the area where warm and cold currents meet. नेक्स्ट है, द ट्रांसपोर्टेशनल कैपेसिटी ऑफ ओशन करंट। इसका आंसर है द ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑफ ओशन करंट अल्टर्स द अमाउंट ऑफ precipitation and temperature in the coastal region along with which they flow. The transportation capacity of ocean currents lead to transfer of warm water to the bottom from the surface and cold water to the surface from the bottom. नेक्स्ट है, डीप ओशन करंट्स। इसका आंसर है डीप ओशन करंट्स लीड टू ट्रांसफर ऑफ वार्म वाटर टू द बॉटम फ्रॉम द सरफेस एंड कोल्ड वाटर टू द सरफेस फ्रॉम द बॉटम. डीप ओशन करंट्स thus lead to redistribution of sea water. Fourth question, look at the map of ocean current and answer the following. First है, how does the Humboldt current affect the climate of South American coast? Answer है, Humboldt current is a cold ocean current and so it decreases the amount of precipitation and temperature on the western coastal region of South America. नेक्स्ट है, इन विच ओशियंस आर काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स नॉट ऑब्जर्व्ड एंड व्हाई. आंसर है काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन. These oceans are located near the polar region. Therefore, the effect of trade wind is found to be less in this ocean. Therefore, counter equatorial currents are not observed in this ocean. नेक्स्ट है, इन विच रीजन डू द कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट मीट. इसका आंसर है द कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट मीट इन द मिड लैटिट्यूड रीजन.
Fifth question, answer the following question. First है, what are the reasons responsible for the formation of deep ocean currents? इसका आंसर है, the temperature varies in various parts of ocean. Similarly, the density of water in various parts of ocean is also found to be different. The difference in the temperature and density of sea water leads to its circulation, and the deep ocean currents are formed. This circulation is known as thermohaline circulation. Thus, the difference in temperature and density of water in various parts of ocean are the reasons responsible for the formation of deep ocean currents. Next question, what is the reason behind the dynamics of the ocean water? First है temperature and density. Warm equatorial water has low salinity and density, so it rises and flows towards the poles. Cold polar water is denser and heavier, so it sinks and slowly moves toward the equator along the sea bottom. Next है planetary wind. Easterlies blow towards the equatorial low pressure area. They meet at the equator and move westward due to rotation of the earth from west to east. These winds drag sea water towards the west because of friction, and most ocean currents follow their direction. Next है rotation of the earth. Ocean current move clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. Next है continental structure. The direction of the ocean current changes as per the alignment of the coastline. नेक्स्ट है हाउ डू winds गिव डायरेक्शन टू द ओशन currents? इसका आंसर है planetary wind push warm and cold current to long distances. Westerlies make currents flow west to east, while near the equator they flow east to west, forming circular patterns. Monsoon winds change direction with season and affect Indian Ocean currents. In the northern Indian Ocean, currents move clockwise in summer and anti-clockwise in winter due to reversal of monsoon winds. नेक्स्ट है व्हाई डू द पोर्ट्स इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा फ्रीज इन विंटर? इसका आंसर है लैब्राडोर कोल्ड करंट फ्लोज अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा. ड्यू टू लैब्राडोर कोल्ड करंट द टेम्परेचर ऑफ सी वाटर नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा डिक्रीजेस. Due to fall in temperature, the sea water along the eastern coast of Canada start freezing. As its effect, the ports in the eastern coast of Canada freeze in winter. स्टूडेंट, यहाँ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट